Good morning student and welcome to my English literature class. As you know, in my June class I explained this lesson The Little Fir Tree, and now again I am explaining this lesson for you. Okay. In that class, Zoom class, I asked with you about the trees, about your favorite trees. Okay, we talk about the trees. Now I will read the lesson and explain the lesson again. Okay, as you know, the tree gives us shade and it can protect us from rain also. The big trees like banyan tree, mango tree and peepal tree, these type of trees can protect us from the rain, है ना? So okay, then let's start the reading of lesson. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. Next page. The sad fir tree had leaves like needles, and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. Next morning, its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree. I wish I had gold leaves, as gods do not eat gold leaves. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. A man came along and stole the gold leaves. I wish I had glass leaves instead. Man, do not steal glass leaves. The next day, its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night, the wind blew. All the glass leaves broke. Next page.
Oh dear, said the fir tree. I like my old needle-like leaves best, for gods do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. Now, student, I will explain your lesson. Okay, now this is the story of a little fir tree and a story of a magician whose name is Shetty. Okay, Shetty was a magician. One day when he was coming back his home, returning means coming back his home, suddenly the rain started. The rain was very heavily. The rain very heavily. Then Shetty want to protect himself. So the Shetty looked around. Shetty looked here and there for shelter. Then he saw a pretty little fir tree and he ran to the tree and stand under the shade of the tree. Okay, the tree protect the Shetty from the rain. And when the rain stopped, Shetty was very happy because he did not get wet. The tree protect him. So he said thank you to the tree because he was a magician. So he said कि I would like to reward you. Okay, Shetty said to the fir tree, I would like to reward you. You can ask 4 wishes. You can ask how many wishes? 4 wishes and I will grant them. और मैं वो आपकी जो 4 विशेज़ हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा कर दूँगा. Then because the fir tree had needle-like leaves, so birds do not make their nest on it. That's why the fir tree was unhappy. So he said to the fir tree said to the magician Shetty, I wish I had green leaves. What he said, what he asked, his fir tree's first way is he want green leaves. He said like my other friends. Other friend means other trees. अब trees है तो trees का friend कौन होगा? Trees ही होगा ना. तो उसने बोला जैसे मेरे दोस्तों की हैं ग्रीन लीव्स वैसे ही मेरी भी ग्रीन लीव्स हो जाए. ओके. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. व्हेन द ट्री वेक अप नेक्स्ट डे हीज विश कम्स ट्रू. उसकी जो विश थी वो सच हो गई. बट आफ्टर सम टाइम, soon means जल्दी ही. Soon a god came along and ate all the green leaves. A god came near the tree and the god ate all the leaves of the tree. Then the tree became sad and he said, oh dear, I wish I had gold leaves. Now the tree want gold leaves. You know na gold? Gold is a material. We use gold to make jewelry. है ना क्लास? हाँ. तो this fir tree next time its second wish
gold leaves. Okay, when the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. अब उसके सारे gold leaves हो गए थे, तो वो बहुत सरप्राइज हुआ. एंड इट सेड हाउ हैप्पी आई एम, बहुत खुश हुआ वो. ओके, आफ्टर दैट अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स. एक आदमी आया और उसने ये देखो सारे गोल्ड लीव्स चुरा कर ले गया. आई विश आई हैड ग्लास लीव्स नाउ. द ट्री विश अगेन फॉर ग्लास लीव्स. अब उसने क्या सोचा कि मेरे जितने भी लीव्स हैं, माई ऑल लीव्स चेंज इनटू अ ग्लास लीव्स, कांच के लीव्स में बदल जाएं, ताकि मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स. ओके, तो नेक्स्ट डे उसको क्या मिल गए? ग्लास लीव्स. एंड ऑल द ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन. सारे ग्लास लीव्स चमक रहे थे सूरज की रोशनी में. हाउ हैप्पी आई एम, अगेन ही सेड हाउ हैप्पी आई एम. बट वॉट हैपन एट नाइट? द विंड ब्लू, बहुत जोर से हवा चली. ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. अब जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं ना आपस में, तो आपस में हिले और टकराए और सारा का सारा कांच के जितने भी लीव्स थे, ऑल ग्लास लीव्स आर ब्रोक. अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट डे द ट्री बिकेम सैड. दुखी हो गया ट्री. वाई? बिकॉज ही इज इट्स ऑल लीव्स, ऑल ग्लास लीव्स हैव ब्रोकन, है ना. सो द ट्री सेड I like my old needle-like leaves best, for gods do not eat. Now the tree said that my old needle-like leaves was good. जो मेरे needle के जैसे थे leaves वो ही अच्छे थे, because gods do not eat them, no man can steal them, and the wind will डू दैम नो हार्म. अब उसको बकरी खा नहीं सकती थी, गॉड्स, है ना. आदमी चुरा नहीं सकता था और हवा से भी कोई नुकसान नहीं होता. देन व्हाट हैपन? द ट्री वेंट टू द स्लीप. एंड व्हेन द ट्री वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन. नीडल्स लाइक लीव्स बैक अगेन. उसके दोबारा से he got the old leaves again. Then the tree became happy and said, oh, I never was so happy, said the little fir tree. Then fir tree said, I was not happy like today. जैसा मैं आज खुश हूँ इतना मैं कभी खुश नहीं था. He became happy to see its old needle-like leaves. Understand, student? Now, can you tell me why? What do you learn from this chapter? आपको क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से? What is the moral of this chapter? In my class, Zoom class of 3rd B और 3rd A, few student told me, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि हमें जो भी देते हैं भगवान, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए. Yes, it is very true. हम जैसे हैं, जो हमें हमारे पास है, हमको उसमें खुश रहना चाहिए. This is the moral of this story. Now, student, in this week, your next chapter is run. This also I will explain you. This is run. It is a poem by Mary Don't. It is a poem. ये एक poem है. Okay.
Who written it? Mary Don't. Mary Don't is the poetess of this poem. Okay, this is your second poem. Run. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little bridge. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, the run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. Okay, I will explain this poem, Run. Student, you can see in this picture so many children are running here, है ना? All girls and boys are running here, and children like to run. Why do you like to run, student? I like when I was like you, when I was small like you, है ना? That time I like to run. उस समय मुझे दौड़ना बहुत पसंद था, मैं बहुत दौड़ती थी. Because running is a very good exercise. Suppose if you are doing only running and you are not doing any other exercise, you are doing only running, so I think no need to do other exercise, because running is a complete exercise. ये एक complete exercise है, इससे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है. ठीक है. एंड इट मेक अस हैप्पी. खुशी होती है हमें दौड़ने से. जब हम दौड़ के पकड़म पकड़ाई खेलते हैं ना, तो वी फील हैप्पी. हमें खुशी होती है और हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और हम फिट रहते हैं और इसको इंजॉय भी बहुत करते हैं. तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट रनिंग. इन दिस पोम द पोएटेस इज टेलिंग टू द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन से कह रहे हैं कि दौड़ने के लिए कह रहे हैं, रनिंग करने के लिए. अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन. इसमें कह रहे हैं अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर, एंड इनटू द सन, जहाँ सूरज की रोशनी हो वहाँ पर, आउट टू द कंट्री, कंट्री मीन्स विलेज, और विलेज में से भी बाहर आप क्या करो, दौड़ो दौड़ो और दौड़ो. किसके साथ दौड़ो? रन इन द रेन ड्रॉप्स, जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना उस समय दौड़ो. रन नीथ द ट्रीज, नीथ मीन्स अंडर, यू कैन रन अंडर द ट्री. रन लिटिल रेसेस, और छोटी छोटी रेस करो. लाइक कि उस जैसे सपोज कोई बच्चा बोलेगा कि हमें उस पेड़ को छू के आना है जो सामने दिखाई दे रहा है, तो यू हैव टू रन टिल दैट tree and you have to touch the tree and come back to your place again. Okay, तो आपको छोटी छोटी रेस करनी है with each little breeze. breeze means gentle wind, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, that. और उसके साथ आपको दौड़ना है. run down the hillside, you have to run down the hillside and you have to run up the lane, you have to run through the meadow. meadow means meadow is a type of a ground where green grass grows, जहाँ पे हरी हरी घास लगती है ना ग्राउंड में, that is meadow. वहाँ पे दौड़ो. then run back again, फिर come back to your place and start running again. run and be merry, and do running and be happy. merry means happy. all through the day, दिन भर दौड़ते रहो. रन टू द कंट्री, और गांव की तरफ दौड़ो. अवे अवे, और बहुत दूर दूर तक आप दौड़ो. ठीक है. क्यों दौड़ो? द मेन मोटो ऑफ दिस पोम इज टू टेल द चिल्ड्रन टू डू द एक्सरसाइज एंड कीप फिट एंड हेल्दी. हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए और इन्जॉय करने के लिए बच्चों से कहा जा रहा है कि आप दौड़ो, बिकॉज it is a very good
exercise. As you know, there are so many games, है ना. In that game we have to run. उन गेम में हमें दौड़ना होता है. For example, फुटबॉल. फुटबॉल में क्या करते हैं? Without running, can you play the football? No ना. Without running, you can't play the football. Hockey, cricket, basketball. तो there are so many games. बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है. और दौड़ने से what is the benefit of running? Running keep us fit and healthy. So dear student, you have to run. You have to do. If you are not running, suppose there is raining outside and you can't run, तो you can do some exercise inside of your house. आप अपने घर के अंदर कुछ एक्सरसाइज कर लो. लेकिन फिट और हेल्दी रहने के लिए यू हैव टू डू समथिंग. आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है. ओके, नाउ आई अपलोडेड योर वर्कशीट ऑल्सो, विच वर्क यू हैव टू डू इन योर English literature notebook. This is your work. Okay, here the name of lesson first is the little fir tree. This is your content, means these all words you have to do the in your English literature notebook. And this is your difficult word which you have to learn the spellings. Okay, and dear student, write all the difficult words with small letter. You can see I used here small letter, है ना. मैंने small letter से लिखा है ना. Just like me, you have to write your difficult word with small letter. And this is your word meaning. Word meaning is also with small letter. All these word meanings. After that, question answers. These are your question answer. You have to start your question answer with capital letter. In the end of the question you have to put the question mark, and in the end of the answers you have to put the full stop. Understand? After that, fill in the blanks. These are your fill in the blanks. These are your true and false. 4 true and false are here, and this is your homework. This is your homework. Make sentence. Make sentence with following words. You have to use these words to make the sentence. This is pretty. Pretty means beautiful. Okay, you can write Aradhya is a pretty girl, या फिर Sujaina is a pretty girl. Okay, after that, this is also your work of poem Run. Same, contain difficult words, word meaning and question answer. And this is your think and write. These are your question answer. I will explain you this think and write. Actually these type of question answer, think and write, these type of question answer you have to do yourself. इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बच्चों, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें. आप अपने मन से भी आंसर्स बनाकर लिख सकते हो. ठीक है, but I written the answer. If you want to write to your own answers, you can write your answers. Your first question is, when you run fast, when you run fast, what do you feel is happening to your body? जब आप तेज़ दौड़ते हो तो आपकी बॉडी के साथ क्या होता है? तो I written, when I run fast, sweat comes from my body. Sweat means पसीना आता है मेरी बॉडी से. स्वेट मीन्स पसीना. माई हार्ट बीट्स बिकम फास्टर. द एनर्जी लेवल ऑफ माई बॉडी ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड. ओके, दिस इज द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? वाई? आपको खेलना और दौड़ना पसंद है. क्यों पसंद है? वाई? You have to give the reason. So yes, I like to play and run about in the park. मुझे पार्क में दौड़ना पसंद है.
इट इज़ बिकॉज, क्योंकि आई फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक आफ्टर दैट। तो जब मैं दौड़ता हूँ ना, दौड़ती हूँ, तो मुझे क्या फील होता है? फ्रेशनेस और एनर्जी, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है मेरे शरीर में। ओके, एनर्जी, एनर्जेटिक मीन्स ताकत आ जाती है आफ्टर द रनिंग। एंड हियर इज द लास्ट थिंग कैन राइट। रनिंग इज अ very good exercise. Name any 3 games that you play in which you have to run. जिसमें हमें दौड़ना पड़ता है, that type of games you have to write. तो I like to play hockey, football and cricket. These are 3 games in which I have to run. इनमें मुझे दौड़ना पड़ता है बहुत। अगर मैं खेलूँगी तो हॉकी में भी दौड़ना है, फुटबॉल में भी, एंड इन क्रिकेट ऑल्सो, है ना। आफ्टर दैट दिस इज I gave you this type of question in your paper also, in your exam also. Now see, write the meaning of following words and make sentence. First and all, you have to write the meaning of the word. Understand what you have to do? You have to write the meaning of the word, then make the सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस बनाना है। beneath मीन्स अंडर समथिंग, beneath मीन्स अंडर, किसी के नीचे। ये दिस इज द मीनिंग एंड दिस इज द सेंटेंस। इन सेंटेंस वी हैव टू यूज दिस वर्ड। काउ इज सिटिंग beneath द ट्री। ओके, सेकेंड इज ब्रिज, अ जेंटल विंड। ब्रिज means a gentle wind, and I am using this bridge to make the sentence. We were enjoying in the cool bridge. Okay, hillside, the side of a hill. Sentence is beautiful flowers grew along the hillside. Understand? First you have to write the meaning of the word, then you have to make the sentence. From next time I will give you this work as homework. ऐसा जो है make sentence का work I will give you as a homework. Okay, so my dear student, all this work you have to do in your literature notebook. Okay then, thank you student for watching the video, and I will meet with you in my Zoom class. Okay, thank you, bye bye.